हेलो फ्रेंड्स, इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम दुनियापुर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से स्कूल बंद हैं और रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, तो ऐसे में इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम की मैनेजमेंट ने अपने तलबा और तालबात के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये काविश हमारे तलबा और तालबात के लिए फ़ायदेमंद होगी। आज का ये वीडियो लेसन इंग्लिश फॉर बिगिनर सीरीज़ या इंग्लिश फॉर नर्सरी स्टूडेंट सीरीज़ का लेसन नंबर 2 है। तो आइए अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। ये आज हम अपनी बुक को पेज 6 पर खोलेंगे। प्लीज़ ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 6 एंड लुक एट दिस पिक्चर। Look at this picture, this one. So, and read with me. It is a car. It is a car. 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 It is a car. देखिए, कल हमने जो हमारा पिछला लेसन था, लेसन 1, उसमें हमने सिर्फ वर्ड्स पढ़े थे। आज हम एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं। It is a car. Look at this picture. It is a car. Now look at this picture. It is a dog. Please look at the picture and say with me. It is a dog. It is a dog. Now spell and say it, is, a, dog, dog. It is a dog. Now look at this next picture. It is an aeroplane. It is an aeroplane. Now spell and say it, is, an. It is an aeroplane. अब देखिए, ये जो वर्ड है इट्स क्वाइट बिग, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। एरोप्लेन, एरो, AERO, एरो, PLANE, plane, aeroplane. It is an aeroplane. It is an aeroplane. Now turn over the page. Let's go to the next page. Now look at this picture. It is a doll. It is a doll. Now spell and say it, is, a doll. It is a doll. It is a doll. Now look at this picture and say the sentence about it. It is a pencil. It is a pencil. Now spell and say it, is, a pencil. PEN, pen, CIL, pencil. It is a pencil. It is a pencil. Now look at the next picture. It is a fish. It is a fish. Now spell and say it, is, a fish. FISH, fish. It is a fish. It is a fish. Now look at this picture. It is a fan. it, is, a fan. It is a fan. It is a fan. It is a fan. Okay, let's revise this page. You need to look at the picture and say these sentences. It is a doll. Look at this picture. It is a doll. Look at this one. It is a pencil. It is a fish. And it is a fan. Now look at these pictures. It is a flower. It is a flower. it, is, a
Flower. Flower. Now look at this picture. It is a glass. It is a glass. 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 It is a glass. Now look at this picture. What is this? It is an egg. It is an egg. It is an egg. It ISS ANN EGG egg. It is an egg. It is an egg. Now look at these pictures again and say with me. It is a flower. It is a glass. It is an egg. So today we have read about these pictures. We have made sentences about these pictures. It is a car. It is a dog. It is an aeroplane. It is a doll. It is a pencil. It is a fish. It is a fan. It is a flower. It is a glass. And it is an egg. Now if you revise this lesson again, तो हम देखते हैं कि इसमें हम it is का यूजेज कर रहे हैं. It is. देखिए हर सेंटेंस में हमने it is का यूज़ किया है. It is. तो हम उसमें आज आपको मैं इसी को रिवाइज कर पाऊँगी. It is का यूजेज हम कैसे और कहाँ पर करते हैं. अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे किसी भी चीज़ के बारे में कि what is this, तो आप उसको आंसर करते हैं it is और फिर आगे उसका नाम. What is this? It's a doll. What is this? It's a cup. And what is this? It's a book. It's a book. Right? So हमने it is का यूजेज भी पढ़ा है और कुछ हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, उनके नाम पढ़े हैं. और आज का जो हमारा लेसन था वो पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 को कवर कर रहा है. अच्छा, अब कुछ पेरेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि एक ही दिन में हम इतना सारा पढ़ेंगे. तो नहीं, आपने एक दिन में इतना सारा नहीं पढ़ना. यू नीड टू आई हैव मेड दिस लेसन फॉर अ वीक. आप इसको, अगर आप नर्सरी स्टूडेंट्स हैं तो आप इसी लेसन को बार बार रिवाइज करेंगे फॉर अ वीक और सो. आप इसको डेली रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको ये अच्छा सा तैयार हो जाए. डेली आप इसको, ये जो पेजेस हैं इनको आपने रिवाइज करना है. अब मैं आपके लिए यहाँ पर इसको एक लाइन में मैं आपको बता दूंगी, जैसे मैंने कल आपको बताया था लास्ट मैंने लेसन में. उसी तरह मैं आपको बता देती हूँ. हमने जो राइटिंग करनी है उसके लिए आपको जो अल्फ़ाबेट है वो आपको आना चाहिए. इन स्मॉल लेटर्स में राइट करना. A B C D E F. इसकी डेली प्रैक्टिस करें. एक दफ़ा लिख लें तो वो काफ़ी होगा. G H I J K, I का भी डॉट डालना है और J का भी, L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. ये हमने अल्फ़ाबेट इन स्मॉल लेटर्स लिखा है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था. ये डेली प्रैक्टिस करें. अगर आप नर्सरी स्टूडेंट्स हैं तो भी करें. अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हैं इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के लिए तो भी करें. आपको ये हेल्प करेगा आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में. अब आपको मैंने ये बताना है, कल हमने आपको बताया था कि आपने वर्ड्स कैसे लिखने हैं. आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में एक सिंपल सेंटेंस जो आज के लेसन में हमारे थे उसको आपने कैसे लिखना है.
तो देखिए उसके लिए हमेशा कैपिटलाइज करें फर्स्ट लेटर को। इट में देखें आई हमने कैपिटल में लिखा है, टी स्मॉल है, IT इट, IS इज, इट इज अ car, 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 and full stop. It is a car and full stop. ये हमने एक सेंटेंस लिखा है। इंग्लिश में सेंटेंस राइटिंग करते वक्त आपका जो फर्स्ट लेटर होता है इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल। इसको हमेशा कैपिटल में लिखें, ये स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता इन एनी केस। और फिर उसके बाद हम सब स्मॉल में लिख रहे हैं, IT इट, फिर छोटा सा गैप, IS इज, अगेन अ गैप, अ कार, CAR, कार, इट इज अ कार। इसी तरह आपने हमारा जो ये लेसन था इसके जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको आपने लिख लेना है। तो अगर जब आप इसको लिखेंगे तो आपको ये इसके स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगे, हैंड राइटिंग भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, और आपको सेंटेंस कैसे लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज का वो भी आपको पता चलेगा। तो आगे एक और सेंटेंस आपके लिए लिखूंगी आपकी आसानी के लिए, दे देखें, IT इट। अगर आप बोल कर लिखेंगे, इस तरह स्पेल करके लिखेंगे तो स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगे। फिर वन फिंगर गैप या थोड़ा सा गैप, इट इज अ डॉग, DOG, डॉग, एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट अ सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपने सेंटेंस, कल मैंने आपको वर्ड्स लिखने बताए थे कैसे लिखने हैं, आज मैंने आपको सेंटेंस राइटिंग बताई है। तो हमारे लेसन में ये 9-10 सेंटेंसेस हैं, ये आप सारे लिखेंगे वन बाय वन। इट इज़ अ कार, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ एन एरोप्लेन, इट इज़ अ डॉल, इट इज़ अ पेंसिल, इट इज़ अ फिश, इट इज़ अ फैन, इट इज़ अ फ्लावर, इट इज़ अ ग्लास, इट इज़ एन एग। और ये आज का हमारा लेसन था। आपने यही बात याद रखनी है कि जब भी आप इंग्लिश का बुक खोलें और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें हमने रीडिंग भी करनी होती है, उसमें हमने राइटिंग भी करनी होती है, उसमें हमने लिसनिंग भी करनी होती है। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुने, लिसन टू दैट केयरफुली, और इसके बाद फिर आप उसको बोलें भी सही। ठीक है, लिसनिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, एंड देन स्पीकिंग, ये सब आपको हेल्प करेंगे टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो आज का ये हमारा लेसन इतना था। नर्सरी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बुक्स के पेज 6 टू पेज 9 को कवर करेंगे, और जो बिगिनर्स हैं वो भी देख सकते हैं मेरे वीडियो लेसन्स में। आप इजीली देख सकते हैं कि हमने आपको क्या पढ़ाया है आज, और हमने आपको सेंटेंस राइटिंग बताई है, सेंटेंस आपने कैसे लिखना है। और इसके अलावा जो ये मेरा लेसन है ये ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेगा बल्कि दिस वुड हेल्प पेरेंट्स ऑल्सो। आपने सिर्फ वीडियो खोलना है यूट्यूब पर और बच्चों को दिखाना है, या स्टूडेंट्स इसको खुद भी देख सकते हैं, और वॉच दैट वीडियो, लिसन टू इट केयरफुली, और फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, एंड यू वुड लर्न इट ईजिली। लर्निंग वुड बी ईजी फॉर यू पीपल। तो इसको आपने थोड़ा सा फॉलो करना है। तो आज का लेसन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये आपके लिए आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में आपको हेल्प करेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।